Dear students, happy morning to you all. Today we are going to see the lesson Ganatantra Divas. What is meant by Ganatantra Divas? Republic Day. On which day every year we celebrated the Republic Day? Yes, my dear students, January 26. Very good. Before going to this lesson, as usual, I'll teach you the meanings for the tough words. Are you ready, my dear students? Sabdartha. Meanings. What is the first one? Rashtriya Parva. Rashtriya Parva. That means National Festival. Swatantrata Divas. Independence Day. But here we'll read about Ganatantra Divas, that is Republic Day. And this is Swatantrata Divas, Independence Day. Yeah, you see the next one? Ganatantra Divas, Republic Day. Samvitan, that is constitutions. The rules and regulations are written in the constitution for us. Salami, what does mean by salami? Salute. Mukhya, important. This is a Tamil word na? Mukhya, mukhyam, like that. Mukhya, important. Matlab, what does mean by matlab? Meaning. Rajdhani, it means capital city. Smriti, memory. Smriti, memory. Janata, people. Who are Janata? People. Prant, state. Janda, flag. Jal Sena, Jal, water. Water force. What is water force called? Navy. Stal Sena, Stal, army. Vayu Sena, air force. Nagarik. Who are Nagarik? We are all Nagarik, citizen. Kardavya, duty. Shall we go to the lesson now? भारत में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं. What is Bharat? India. In India, we celebrated many festivals. What is meant by त्योहार? Festival. We have celebrated many festivals. जैसे पोंगल, you knew very well ना. दीपावली, ओणम, उगादि, बकरीद or Christmas. These are the festivals we have celebrated in our country. इस प्रकार राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं. Like the same way, there are some national festivals also we are celebrated. उनमें they are गणतंत्र दिवस, like this ना, Republic Day, स्वतंत्रता दिवस, Independence Day, और गांधी जयंती. You know Gandhi Jayanti very well. मुख्य उत्सव है. These are some important national festivals. गणतंत्र दिवस को सारे देशवासी, every citizen, those who are lived in our country, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं. We are very happy to celebrate this occasion. सन 1947, in Hindi we read it as 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत ने अपने नया संविधान बनाया. On 1947 we got freedom from the Anglo-Indians now. From that year onwards we celebrated this स्वतंत्रता दिवस. 26, in Hindi we read it as 26 January 1950, 1950 से यह देश भर में लागू हुआ. We got republic on this particular day, 26 January 1950. उसी की स्मृति, on the memory of that particular day, यह पर्व मनाया जाता है. We'll celebrate this festival. उस दिन सवेरे, that means early morning, इंडिया गेट के मैदान में, where is इंडिया गेट? मुंबई ना. इंडिया गेट मैदान में राष्ट्रपति, who is राष्ट्रपति? प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं. National flag. The president of our country hoisted the national flag on that particular day early morning. Jal, that means navy force. Stal, army, और वायु सेना, air force की टुकड़ियां राष्ट्रपति को सलामी देती गई. They gave salute for our president. 31, what does it mean by 31?
तोपोम, कैनॉन. In Tamil we call it बीरंगी ना. 31 तोपोम की गरज के साथ राष्ट्रपति को सलामी दे जाते हैं. They gave respect for our president by using 30 bullets of cannon. सैनिक वाद्य, the soldiers play musical instruments. बजने लगते हैं. They played musical instruments on those particular days. राष्ट्रीय पर्व को मनाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है. Celebrating national festival is the main one of the important duty of our citizens. Okay, my dear students. भारत में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, दीपावली, ओणम, उगादी, बकरीद और क्रिसमस. इस प्रकार राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं. उनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती मुख्य उत्सव है. गणतंत्र दिवस को सारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं. सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत ने अपना नया संविधान बनाया. 26 जनवरी 1950 से यह देश भर में लागू हुआ. उसी की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है. उस दिन सवेरे इंडिया गेट के मैदान में राष्ट्रपति राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं. जल, स्थल और वायु सेना की टुकड़ियां राष्ट्रपति को सलामी देती है. 31 तोपों की गरज के साथ राष्ट्रपति को सलामी दे जाती है. सैनिक वाद्य बजने लगते हैं. राष्ट्रीय पर्व को मनाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है. Did you understand this, my dear students? Thank you all.